咱做回来关心，在印度北部的一个城市，3站有不明的气体流出来，造成11个人死亡，4个人住院，而且有部分的遗体拢已经翻乌。因为这个气体流出的原因，目前是也无清楚。另外，日到伫咧西部有一栋3层楼高的建筑物是向倒去，内底人真侪拢被护走出来，造成至少6个人死亡，几啊10个人要掉伫内底。目前当局当伫咧拍拼咧救人。因为这栋建筑物的所有权人，目前是已经互抓起来啊。印度国家灾害应变部队的人员挂防毒面具，准备要入去现场。当局已经疏散附近的民众。旁遮普邦卢迪安纳市发生不明气体外漏，造成死伤，原因不明。有人伫社群媒体讨论讲，3具尸体拢变成乌青色。उनके 3 बच्चे थे, अपने मियाँ बीवी थे, पांचों की डेथ हो गई। तो कुछ अभी कारण तो पता नहीं होगा। कुछ कारण नहीं पता है。卢迪安娜负责员马利克讲，气体可能是自涂骹的铁工挂清出来，正伫咧采集样本，初步怀疑是有化学物质加铁工挂内面的甲烷发生反应。जो पेशेंट सिक हैं वो अभी 4 हैं, 11 की वो डेथ कंफर्म हो गया।旁遮普邦的议员齐西娜讲，事发的地点是一间无人店加一间诊所的附近，不过无法度确定气体是倒位走出来。有人伫咧买牛奶的时阵，买到一半，人才纷纷倒。旁遮普邦的官员讲，原来的源头是一间工厂。另外，伫西部比湾地区，所有人员伫咧这栋3层楼房的大箱混合的建筑物继续救人。而到规栋建筑物，敢若是薄饼同款，规个绑乱，人拢袂赴会走。और उसमें एक छोटी बच्ची भी थी। उस बच्ची का इंडिकेशन ये डॉग्स ने दिया था कल। तो हमारे डॉग्स भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, ये कैनाइन सर्च करते हैं。官员讲，这栋楼是违建，所有人非法起厝已经被逮捕。伫咧印度，常常发生建筑物倒去的情形，尤其是伫咧雨季期间，出代志拢是老旧的违建。公司新闻吴文玲编辑。